Hello friends, welcome to my YouTube channel. I'm Zishan. आज हम डिस्कस करेंगे कि how you can create a get API in Express.js. So let's start. This is the folder that I've just created, and now I'm going to create a file named server.js, and I need to now do npm init, which is short for initialization. So it will help me to create a package.json file. So let's press enter, and we have the file. Now we need to install the Express package. It's a library, package library, same thing. So you know that very well. Express.js is used for back-end web development. Okay, now that is installed. Now we need to import it. So what we are going to do, we will declare a variable named Express, and inside it we will import the Express library. So this is what we are going to do, and now we are going to create another variable app, and it will be an object which will have created using Express function. Okay, now we have the app. We need to listen. हम एक कोड पे लिसन करेंगे अपने कोड को रन करने के लिए. यहाँ पे हम एरो फंक्शन को यूज करते हैं और इस तरह से पोर्ट एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसको 5000 वैल्यू असाइन करते हैं और console.log app is running, and we will be using in this tutorial static data. हम database से नहीं डाटा लाकर get request भेजेंगे, बल्कि एक static डाटा होगा, यानी एक एरे होगा, उसके साथ हम अपना काम करेंगे. तो let's call that students, and this is an array, so we will use square brackets. Now we will have the ID property and the name property. Let's call it Ali, and you will have the second object, and let's call it Rizwan. Okay, so there we have it. Now we need to create the get API. So we get and API dot slash and students. Let's do that, comma, and we will have request comma response. This is the callback function, and you know that when we're using arrow function we don't need to use the function keyword, so we haven't used that. And we need to do is request dot response dot send, and we will have courses, students, and we will also learn how to create the post API. First we're creating the get, and
we also need to create एक गेट एपीआई तो क्रिएट कर ली जो कि सारे स्टूडेंट्स को शो करेगी। हम ऐसी भी एक एपीआई क्रिएट करेंगे जो कि एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को शो करे। जो आईडी यूजर एंटर करेगा सिर्फ वही वाला स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट शो हो। ये वाली गेट एपीआई अब हम लिखने लगेंगे। require dot comma response and arrow curly braces and user const answer is equal. We will use the find helper method. So we will say students, which is the array, and then the helper method of this of array find। और find क्या करता है, जब भी उसको, अभी मैं पूरा ये फंक्शन लिख लूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे go back s dot id is equal to request dot params dot id। जो पैरामीटर के तौर पर आईडी पास की गई है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। रिक्वेस्ट वही होती है जो यूजर भेज रहा है उसके जरिए से, और डॉट आईडी तो ये वाली आईडी हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। और ये जो है इस एरे में स्टूडेंट्स एरे की आईडी को पिक करेगा और वो होगी इंटीजर फॉर्म में, लेकिन जो हमें यूआरएल के थ्रू मिलेगी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आईडी होगी, तो उसको हम इंटीजर में पास करेंगे क्योंकि हम स्ट्रिक्ट इक्वालिटी के थ्रू दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब फाइंड क्या करेगा, फाइंड ये एक्सप्रेशन देखेगा, ठीक है, और अगर ये सेटिस्फाइड है कंडीशन, एक्सप्रेशन को कंडीशन भी हम कह लेते हैं, तो तब वो ट्रू नहीं बल्कि जो एरे में स्टूडेंट्स एरे में इस कंडीशन को सबसे पहला एलिमेंट जो एरे का इस कंडीशन को फुलफिल करेगा उस एलिमेंट को ये फाइंड फंक्शन रिटर्न कर देगा, यानी उस ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट्स में से उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। और हमें वही चाहिए, हमें यूजर एक आईडी एंटर करेगा सपोज 2, तो हम वो फाइंड फंक्शन ढूंढेगा 2 आईडी किसके साथ मैच कर रही है, जो यूजर ने एक आईडी भेजी होगी, ठीक है, और एरे में से किस ऑब्जेक्ट की आईडी वही 2 है। जब मिल जाएगा उसको ऐसा एलिमेंट या ऑब्जेक्ट तो वो उसको रिटर्न कर देगा और आंसर ans वेरिएबल कांस्टेंट में स्टोर करेगा, एंड वी देन नीड टू शो दैट। सो रिस्पांस डॉट सेंड answer। So this is the get API, and to test this let's run our code. So we will say node server dot js app is running, and I'm using this recbin.com to test my APIs. So it is localhost, यही वाला URL कॉपी करना होगा और यहाँ पे स्टूडेंट्स और आईडी पास करनी है, पास टू, और गेट वाली रिक्वेस्ट है, गेट को ही सिलेक्ट किया हुआ है।
इट इज नॉट वर्किंग। मैं इसमें देखता हूँ क्या इशू है, उसको डिबग करता हूँ एंड देन आई विल गेट बैक टू यू और फिर वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। ओके फ्रेंड्स, आई एम बैक। इशू वाज वेरी ऑब्वियस वन। मैं सिंपली एपीआई लिखना भूल गया, इसमें एपीआई स्लैश स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्टूडेंट लिख दिया था। दैट वाज द इशू। नाउ इट इज वर्किंग, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द स्टेटस कोड ऑफ 200। जब नॉट फाउंड हो तो फिर स्टेटस कोड आता है 404। और हम अभी काफी सिंपल कोड लिख रहे हैं, इसमें बहुत से केसेस को हम हैंडल नहीं कर रहे। सो दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, अब पोस्ट रिक्वेस्ट होती है न्यू, अगर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए। इस एरे क्रिएट हुई है, इसमें अगर एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए पोस्ट रिक्वेस्ट। तो पहले आएगा एंड पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होगा। तो उसको कैसे पता चलेगा? जब आप चेक कर रहे होते हैं एंड पॉइंट, वो यहाँ से गेट हमने सेलेक्ट किया था, फिर पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, तो इस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। और EQ RES, that is response, and then arrow function, or any student request or body const new student is equal to ID is going to be students dot length plus 1, comma, and name is going to be request dot body dot name. So after that, what we need to do is push students is the name of the array, and we need to push this new student in that array, and we need to response dot send and new student, and we also need to use a middleware। ये बहुत important चीज है, आपको एक मिडलवेयर यूज करना होगा और एयरपोर्ट उसका नाम है express.json। इसको यूज करना कंपल्सरी है इस कोड को रन करने के लिए, otherwise you will get an error. So we will again now run our server. App is running. Here पोस्ट सिलेक्टेड है, यहाँ से रॉ नहीं कंटेंट ही सिलेक्ट करेंगे और जेसन फॉर्मेट में एंटर करना है। इट इज ऑलरेडी सिलेक्टेड और यहाँ पे डबल कोट्स डालना लाजमी है जब आप इस वेबसाइट को यूज करते हैं। इसमें इस तरह से प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। नेम यानी जो मैं लिख रहा हूँ वर्ड नेम, तो तब भी डबल कोट्स यूज कर रहा हूँ। और नाउ हम बिलाल एक नया स्टूडेंट है उसको हम एंटर करते हैं और पोस्ट को ही हमने सिलेक्ट किया हुआ है। ये बताता चलूँ रेक्ट बिन डॉट एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है।